आप अपना परिचय बताइए जिससे कि मॉक इंटरव्यू शुरू किया जाए। सर, मेरा नाम इशिका जायसवाल है। सर, मैं मुगलसराय उत्तर प्रदेश से हूँ। सर, I have completed my schooling in my native place. After that, I have completed my LLB from Banaras Hindu University, and I pursued LLM in 2021. What is the full form of LLM? Sir, Master of Laws. आपका जिस पद पर चयन होगा उस पद का क्या नाम है? Sir, Assistant Prosecutor Officer. What is the function of assistant prosecution officer? Sir, the main function of Assistant Prosecutor Officer is to present the witnesses before the courts and to सर चार्जशीट्स को सर वो देखते हैं, इवेल्युएट करते हैं कि सर वो चार्जशीट जो फ्रेम की गई है अगेंस्ट अक्यूज्ड वो सही है या नहीं, और सर एंड रेगुलर बेस में जो रजिस्टर्ड है उसको मेंटेन करने का सर फंक्शन है। और ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अपॉइंटमेंट के संबंध में क्या प्रावधान है? सर, सेक्शन 24 CRPC talks about the appointments of public prosecutor. So the state government and sir appoint the public prosecutor. Section 24 of the CRPC talks about the appointments of public prosecutor. What is provision? Sir, the state government has appointed the public prosecutor who has an 7 year of experience regarding the practice. Then in every district court, the state government has appointed the public prosecutor. सेक्शन 24 में सब क्लास 4 एक है, कुछ याद आ रहा है आपको? सर, द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सर वो नेम वो करता है तो सर उसके थ्रू परमिशन ऑफ कोर्ट ऑफ सेशन। yes sir, the permission of the court of session, then the public prosecutor. अच्छा बताएं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्चार्ज एंड एक्विटल? So sir, in case of discharge, when if there is a no prima facie evidence show, there is a no need to frame of charge. So in case of acquittal, after the framing of charge, the person is acquitted. So in a case of discharge, there is there can be rearrest of person on, there can be a new trial begin. But sir, after the acquittal, there is no new trial is begin under section 300. My question is, how can you decide any offense is bailable or non-bailable? In any others law, Yes sir. Offense has mentioned and not talk about what bailable or not bailable, then how will you decide? If the offense, the imprisonment is less than 3 years, then in that is a bailable offense. If the offense is punishable is more than imprisonment for 3 years, then in case of non-bailable offense, in this case we differentiate between the bailable and non-bailable offense in any other offense, in any other law. What is difference between inquiry and trial? Okay, sir. The inquiry conducted by the court and magistrate, other than a trial. The inquiry, after the inquiry, trial is begun, and trial and in the trial, it is a process. At a result, the person is whether acquitted or convicted. So it is the inquiry is the second stage of proceeding, and the trial is the third stage of a proceeding, final stage of a proceeding.
What is essential ingredients of FIR? The essential ingredients of FIR is the FIR must be in the form of oral or writing form. If it is a writing form, it must be written by a police officer, and FIR must be a first information report. That is, and and First of all, FIR must be related to cognizable offense. yes, all the FIR is related to crime. हाँ, अब बताएं. Sir, first of all, FIR is related to cognizable offense. Then the FIR is given to the police officer, and it may be a written in oral form, and sir, it is sir, the jurisdictions required नहीं होता है FIR में. FIR can be filed anywhere. That is the zero FIR maybe, and so that are all are the essential. What is difference between police diary, case diary, general diary? The general diary are those diary that the police are maintained in a regular basis. So that are called a general diary. The case diary are those diary it, which is mentioned only the investigate procedure of investigation from on the date of filing the report on the last procedure maintained this. What are the main contents of procedure of investigation that are mentioned is the diary, that is the case diary. What is And the the case diary produced before the magistrate. evidentiary value of case diary? Sir, case diary is used for the contradicting purpose for the evidences. तो जनरली कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए होता है सर ये ट्रायल में कि सर जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी मटेरियल कलेक्ट किए गए हैं वो ट्रू हैं, जो भी एविडेंस दिए गए हैं सर वो ट्रू है, सर इसलिए केस ये एविडेंस। केस डायरी का कोई साक्षिक मूल्य नहीं होता है. केस डायरी की सिर्फ इतनी उपयोगिता होती है कि मजिस्ट्रेट इंक्वायरी ट्रायल में उससे सहायता ले सकता है, लेकिन एज ए एविडेंस उसको यूज नहीं कर सकता है. ओके. व्हाट इज मेंसरिया? सर मेंशरिया मीन्स evil intent. Sir, when a person has intention to commit any crime, if there has an means evil intent. So basically, the means here talks about the evil intent, the bad intention to behind the commission of any crime. इस पर एक मैक्सिम है. Yes, sir. मैक्सिम याद है आपको? Yes, sir. Actus non res nisi mansit rea. No man shall be uh, uh, unless his mind. No man shall be a guilty unless his mind is guilty. ये मेंसरिया का प्रिंसिपल आईपीसी में अप्लाई होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. It is applicable. हाउ? Sir, so behind any commission of a crime, the mens rea applicable होता है sir कि in case of murder or of any offense. सुप्रीम कोर्ट का इस पर क्या ओपिनियन है कि मेंसरिया आईपीसी में अप्लाई होती है कि नहीं होती है?
सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ। ये सेक्शन 34 सेक्शन 149 में स्कोप किसका वाइड है? This section 34 generally talks about common intention. Section 149 is the common object. सर सेक्शन 34 का स्कोप ज्यादा वाइड है सर। कैसे, समझाइए, कैसे 149 की अपेक्षा वाइड है? Sir, this section 34 means when any two or more person furtherance of common intention to commit any crime. Sir, that is in a common intention. So that are the स्कोप कैसे वाइड है सेक्शन 34 का, इसको समझाइए 149 की अपेक्षा। आपने किसकी बुक पढ़ा है आईपीसी में? डॉक्टर एस.एन. मिश्रा। हम्म, एस.एन. मिश्रा। एस.एन. मिश्रा। एस.एन. मिश्रा साहब क्या लिखते हैं? 34 का स्कोप 149 की अपेक्षा वाइड है। Section, I think section 149 scope is wide because in section 149 ओवर एक्ट की जरूरत नहीं होती है सर, 34 में ओवर एक्ट होना चाहिए सर, इस वजह से 149 का स्कोप वाइड है। Section 34 is only rule of evidence. It does not constitute any offense. While section 141 itself अपने आप में ऑफेंस है। ठीक है, सेक्शन 34 को अप्लीकेबल होने के लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन मस्ट है, जबकि सेक्शन 149 को लागू होने के लिए अनलॉफुल असेंबली का मेंबर होना ही सफिशिएंट है। इसलिए सेक्शन 149 का स्कोप सेक्शन 34 की अपेक्षा इसको वाइड माना जाता है। What is difference between kidnapping and abduction? Sir, so kidnapping is given under section 359 of the I.P.P. So kidnapping has a two forms, kidnapping from India and kidnapping from lawful guardianship. So in case of kidnapping, the consent of the age doesn't matter. But in the case of abduction, their consent is given, although the consent is given, and the deceitful means is using that against that person. The abduction is a continuing offense, and kidnapping is not a continuing offense. So they are the main difference between abduction and kidnapping. अपहरण के लिए दंड का प्रावधान कहां पर दिया गया है? फिर 363 में दिया है। तो 363 उसमें तो किडनैपिंग के लिए दंड का प्रावधान, तो abduction किडनैपिंग एंड abduction दोनों के लिए है। नहीं तो आपने सही ढंग से नहीं पढ़ा है। सेक्शन 363 में केवल किडनैपिंग के लिए दंड है, abduction के लिए नहीं है। abduction कब पनिशेबल होता है? अपहरण कब दंडनीय होता है? सर व्हेन ही सर जब कोई किसी के मर्जी के बिना उसे अपहरण करता है सर, तो सर वो पनिशेबल होता है। हस्बैंड है,
और उसकी पत्नी मायके में है। हस्बैंड जाता है पत्नी के मायके, अपने ससुराल, और वहां से पत्नी को बलपूर्वक जबरदस्ती लेकर के अपने घर चला आता है। तो हस्बैंड ने यहाँ अपहरण किया कि नहीं किया? No, sir. क्यों? अपहरण की परिभाषा क्या है? ताकि जब कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बाई फोर्स और डिसीटफुल मीन्स एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर देता है, इसी को अबडक्शन कहा जाता है। अपहरण की एक तो परिभाषा है कि Yes, एक sir. व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को बल का प्रयोग करके या प्रवंचनापूर्ण तरीके से एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर देता है, तो उसी को अपहरण कहा जाता है। हस्बैंड बलपूर्वक पत्नी को लेकर अपने घर चला आया। तो ये परिभाषा के अनुसार अपहरण हुआ कि नहीं हुआ? But sir, वो sorry sir, sure नहीं है. What is section 362? Sir, abduction. हाँ, तो व्हाट प्रोविजन है गिवन? व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ Sir, abduction? when any person without the consent of that person is taking away or by the deceitful means one place to another place that he commit to an offense. तो ये जो प्रॉब्लम पूछे हैं इसमें सारी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है कि हस्बैंड पत्नी की कंसेंट के बिना बाई फोर्स उसको लेकर के और अपने घर पर चला आता है। फिर से उसका जो इंटेंशन है वो डिसाइडफुल मीन नहीं होता है। तो डिसाइडफुल तो अलग है ना, या तो बाई फोर्स का यूज होना चाहिए या डिसिटफुल मीन्स होना चाहिए। तो एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है। तो आर शब्द लगा है ना, चाहे बल का प्रयोग करे या छल का प्रयोग करे। अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन को एक्यूड एंड एकम्प्लिस? The co-accused means when the two or more persons are jointly tried for the same offense that called a co-accused, and the accomplice is definition of accomplice is given 133, that is a participant of the crime who participate the commission of the crime, that are the accomplice. Means when a four person has committed the crime, one person become the witness against the other crime, that person is called an accomplice. And what is section 306 and 307 of CRPC? The pardon to grant a pardon to accomplish. Power of pardon to grant. और 307 में सर before the judgment when the court give pardon to the accomplice, so that is 307. आपके सिलेबस में 6 माइनर एक्ट्स हैं। Yes sir. 6 माइनर एक्ट्स का पूरा नाम बता दीजिए। So the Dowry Prohibition Act 1961, the Arms Act 1959, and the Scheduled Caste and Scheduled Type Prevention of Atrocity against 1989, and Prevention of Corruption Act 1988, and Explosive Substance Act 1908, and the POCSO Act 2012. Okay.